So we were discussing about the stretch reflex, okay, and the details of the receptor, which is the muscle spindle. We have already seen. Just I will repeat the innervation. Each muscle spindle within itself, मैं receptor की बात कर रहा हूँ. That receptor in itself contains intrafusal fibers, okay, and those intrafusal fibers are of two types: nuclear bag fibers and nuclear chain fibers. Each muscle spindle contains 2 to 3 nuclear bag fibers and 5 to 7 nuclear chain fibers. एक मसल स्पिंडल में इतनी सारी चीजें होती हैं अंदर, nuclear bag and nuclear chain fibers. There are two. Then these fibers has got two type of the structure. Central structure is sensitive to, or rather it is sensory in nature, while the peripheral portion of these fibers is in motor in nature. So this receptor serves both functions. It is a sensory part also, it has got a motor part also. To convey the sensory component, two types of the nerve supply are there. One is type 1A type of the fibers, which are thickly myelinated, fast conducting, mainly supplied to the nuclear bag fibers as well as to the nuclear chain fibers. As they wind around the receptors, rather the fiber central portion, that's why these endings have been named as the annulospiral nerve endings. Okay. The second type of the sensory innervation comes from the nuclear chain fibers only, and that is from the type second fibers. And the endings are specific that they form a sort of flower type when they innervate the sensory portion of the type, nuclear chain fiber. So they are known as flower spray type of the endings. तो सेंसरी एंडिंग मसल स्पिंडल में दो तरह की हैं, एनुलो स्पाइरल नर्व एंडिंग्स एंड फ्लावर स्प्रे टाइप ऑफ द नर्व एंडिंग्स. एनुलो स्पाइरल नर्व एंडिंग्स are called as the dynamic sensory fibers because they convey rate of change of the muscle length. Change rate में कितना बदलाव आ रहा है, कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है. So rate of change of the muscle length is conveyed by the 1A type of the fiber, while the fixed length change is conveyed by the type second fiber, that is the flower spray type of the ending. That is the sensory innervation. While motor innervation to the peripheral part is again two types, gamma dynamic and gamma static. Gamma dynamic fibers are supplied to the nuclear bag fibers, while the gamma static are supplied to the nuclear chain fibers. And we have got the beta afferents also. The function of those are not yet known. So that is the main innervation of the muscle spindle. Muscle spindles are arranged in parallel with the extrafusal muscle fibers. So whenever there is a change or stretching of the skeletal muscle fiber, there is simultaneous stretching of the muscle spindle also. So both nuclear chain and nuclear bag fiber, they get stretched. Because of the stretch, there is an increased action potential discharge from the annulospiral nerve endings as well as from the flower spray endings. These information or this information is conveyed to the spinal cord, and these fibers innervate directly or synapses directly with the alpha motor neuron. It is a monosynaptic reflex and causes activation of the alpha motor neuron, and the concerned muscle which has been stretched contracts by response. Okay. So that is a simple stretch reflex, and the main purpose or mere function of the muscle spindle is that it acts as a comparator of the length of extrafusal and intrafusal muscle fibers. So when the skeletal muscle is stretched, spindle is also stretched, the sensory endings are stimulated, reflex is activated, there is a contraction of the skeletal muscle fiber. So that is a simple negative feedback mechanism. Okay. Now, when the muscle contracts, then the stretch over the muscle spindle diminishes or it over. वो जो stretch create हुई थी वो खत्म हो गई और ये reflex खत्म हो गई. So under normal circumstances, this response will ultimately cause relaxation of the muscle. Muscle contraction हो गया, मगर spindle का रोल खत्म हो गया. Spindle का रोल खत्म होते ही जो फंक्शन कर रहा था वो नहीं हो पाएगा. So muscle में जो टोन होता है वो खत्म हो जाता है. So to balance, to prevent that situation, because we need continuous presence of the muscle tone
in the skeletal muscles for execution of the voluntary motor activity. उसके लिए टोन जरूरी है हमें, तो इस तरह की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, that cannot be permitted in the body. So what happens, we have got the gamma efferent fibers are there. Now these gamma efferent fibers discharge simultaneously when the contraction is taking place. So they causes contraction of the intrafusal muscle fiber, जो motor component है उनका contraction करता है. So a continuous tension is maintained over the central sensory portion. उस पे लगातार तनाव बना रहता है और उसकी वजह से ये रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड रहती है, so that the voluntary motor activity is possible. So gamma motor efferents are responsible to maintain the sensitivity of the muscle spindles when there is a change in the length of the extrafusal muscle fibers. Okay. So there is a phenomena, or there is a small nomenclature that is known as a gamma loop. Sometimes we ask short note about this gamma loop also. Now just understand that alpha motor neurons, which we have labeled or called as final common pathway, because that is the neuron which is innervating the skeletal muscles of the body. This alpha motor neuron can be activated by several mechanisms. बहुत सारी mechanisms है जिससे इसको activate किया जा सकता है. One is that while executing voluntary motor activity, the upper motor neuron from the cortex via the corticospinal pathway stimulates the alpha motor neuron and the muscle contraction is there. That is one mechanism, directly by the upper motor neuron. The second mechanism is by stimulating by causing stretch of the muscle. The stretch of the muscle is there. First sensory neuron in the dorsal root ganglia gets stimulated, direct innervation with the alpha motor neuron, and there is the contraction of the muscle. That is the reflex we have seen. And the third way is directly by the gamma motor neuron. If the alpha motor neuron is not stimulated directly, if it is not stimulated from the periphery also, then it can be stimulated via the gamma motor neuron. So when we excite gamma motor neuron, because this is one of the pathology involved in the excess of muscle tone or hypertonia in certain disease of the central nervous system. So gamma motor neuron, when individually fires more action potentials down the skeletal muscle, then they causes contraction of the intrafusal muscle fibers. एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं कर रहे, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स विल स्ट्रेच द सेंट्रल सेंसरी पोर्शन ऑफ द मसल स्पिंडल. दैट विल कॉज execution or excitation of the stretch reflex and will cause stimulation of the alpha motor neuron and contraction of the extrafusal muscle fibers. So there are three ways by which the alpha motor neuron can be stimulated. So the stretch reflex, then, just to summarize, we know the stimulus to the stretch reflex is stretch of the skeletal muscle. Simple. Stretch active भी हो सकती है, stretch passive भी हो सकती है. Whatever may be the mode of stretch, that is acting as a stimulus. Afferents we know, 1A afferent fibers and type 2 fibers are acting as afferent fibers. Cell body is located in the dorsal root ganglia. It is a monosynaptic reflex, directly synapsing with the alpha motor neuron, and contraction of the fibers is there. Response, of course, is the contraction of the concerned muscle in the body. And that activity of this basic stretch reflex can be modified, as we have seen, by the gamma motor neuron. So this simple stretch reflex, what functions does it serve? So functions of the stretch reflex, first and foremost, is that it is responsible for tone in the skeletal muscles of the body. ये tone के लिए responsible है. Tone क्या होता है? If you try to feel your own muscles, ये flabby नहीं है. They are showing certain degree of resistance. Okay, that is the exhibition of the tone. The second way of clinically assessing tone we will learn in the practical also, that if we bend or stretch the muscle passively, मैं तो खुद कर रहा हूं, मगर मैं अगर किसी और के करूं तो पैसिव स्ट्रेच कहलाएगा. मैं अभी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कर रहा हूं, आई कैन फील द ट्राइसेप्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इट मींस इट इज रेजिस्टिंग दिस एक्शन. ओके, that is exhibition of tone in the triceps muscle. Similarly, if I open the arm
If I extend at the elbow joint, then biceps is getting stretched, and I can feel the contraction of the biceps muscle. So that is the exhibition of the tone, and presence of this tone is absolutely essential to carry out all types of the voluntary motor activity. इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ये टोन होना जरूरी है. पैथोलॉजिकली टोन घट भी जाता है, टोन बढ़ भी जाता है, उसकी आगे बात करेंगे. तो मसल टोन क्रिएट करना जो है ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स का काम है. सेकंड, इट इज द बेसिक पॉस्चरल रिफ्लेक्स. आपका ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक पॉस्चर क्या है? स्टैंडिंग ऑन द टू लेग्स is the basic posture, and this reflex is absolutely essential for standing, because when I stand up, because of the effect of gravity, my body will tend to collapse. When the collapse is taking place, then the quadriceps are getting stretched. When the quadriceps are stretched, they contract in response to the stretch reflex, and the person stands up immediately. That is the basic postural reflex, stretch reflex. Then third is the detection of the load. Load detection is very simple. Suppose my arm is in the semi-flex position and I put certain weight over here, then it is stretching the muscle definitely. It is pulling down my arm, okay, and that pulling down will result into the stretch of the biceps muscle, and bicep will contract definitely of it to the same magnitude as the load is applied. Now if I increase the load here, then that load will carry down arm further, नीचे चला जाएगा. ये ग्रेविटी की वजह से अगर आपने वजन बढ़ा दिया तो ही आपका स्ट्रेच बढ़ जाएगा. स्ट्रेच बढ़ते कॉन्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और ये वापस ऊपर आ जाएगा. तो और हमें पता लग जाएगा कि लोड बढ़ गया है ना. तो लोड डिटेक्शन इज द थर्ड, एंड ऑफ कोर्स रोल इन द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी इज देयर, बिकॉज विदाउट दिस रिफ्लेक्स प्रेजेंट वॉलंटरी एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल. ओके, दैट इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स शोन ओवर. So stretch reflex is a myotatic reflex. Myotatic means it is of muscular origin. It is of two types: phagic stretch reflex and tonic stretch reflex. Phagic stretch reflex is produced by the sudden stretch of the muscle. Sudden stretch of the muscle is a phenomena that is used by clinicians to assess the functional integrity of this reflex itself, because that will give an idea about the functioning of the spinal cord itself, or the higher motor neurons, or the first order neuron, or we call the upper motor neuron. So if I, in a patient, if I take the patellar hammer, stretch or rather stimulate the biceps tendon by taping over it, that is a sudden stretch will be there, and response comes by the flexion at the elbow joint, muscle contract. So this is a sudden change. Similarly, if I tape over the patellar tendon, then there is a immediately extension at the knee joint. This is the phagic reflex. Sudden stretch हो रहा है तो ये phagic reflex आ रही है और muscle respond कर रही है, ये stretch reflex है. While this is phagic stretch reflex is definitely carried by 1A type of the fiber through the alpha motor neuron, monosynaptic reflex. The second one is the tonic stretch reflex that occurs when I passively flex or passively move at the joints. मैं अगर मूव करूं इसको पैसिवली तो मैं ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कर रहा हूं, धीरे धीरे स्ट्रेच हो रही है, पैसिवली हो रही है, फिर भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. दैट इज द पैसिव or tonic stretch reflex, and is being transmitted by type second afferent fiber from the flower spray type of the endings. Okay, ये गामा लूप हम देख चुके हैं ऑलरेडी. Now this gamma motor neuron, which is absolutely essential for maintenance of the sensitivity of the muscle spindle and the stretch reflex. Okay, that gamma motor neuron or these gamma neurons are situated in the spinal cord anterior horn. Their activity can be modified by the supraspinal centers and thus can change
the tone in the skeletal muscles of the body. So these supraspinal centers modifying the activity of the gamma motor neurons are first cerebral cortex, motor cortex जहां से voluntary activity generate होती है. There it is always ensured that if the voluntary motor activity is required, then alpha motor neurons are getting activated. Simultaneously, the cortical areas also activate the gamma motor neurons. So there is always an alpha gamma co-activation that ensures that the muscle spindle sensitivity is not lost when the muscle contracts. तो सेंसिटिविटी मेंटेन करने के लिए गामा मोटर न्यूरॉन को साथ ही साथ स्टिमुलेट करना पड़ता है. दैट इज नोन एज अल्फा गामा को एक्टिवेशन. सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द हाईएस्ट सेंटर इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द गामा मोटर न्यूरॉन. द सेकंड वन इज द सेरिबेलम, थर्ड इज द बेसल गैंग्लिया, and fourth is the reticular formation of the pons and medulla oblongata. Mind it, the cerebellum and the basal ganglia, they influences the activity of the gamma motor neuron via the pontine and medullary reticular formation. Okay, basal ganglia inhibits gamma motor neurons, cerebellum also inhibits gamma motor neurons in human beings. In animals, other activities there. And of course vestibular nucleus, which mainly influences the alpha motor neuron but also affect the activity of the gamma motor neuron. So cerebellum, basal ganglia, reticular formation and vestibular nucleus, they all can modify the activity of the gamma motor neuron and thus can modify the activity or status of the muscle tone in the body, because we will see later on that in disease of any of these organs, the muscle tone is profoundly affected. Either it is decreased or increased, and under both circumstances, voluntary activity becomes very difficult to happen. Then other things which can cause change in the stress reflex is the anxiety, unexpected movements. सडन किसी को धक्का दे दिया जाए तो मूड हो जाएगा. एंग्जाइटी अगर है किसी को मैं स्लाइटली टेप करूंगा तो वायलेंट रिएक्शन आता है, गामा मोटर न्यूरॉन एक्साइट ज्यादा हो जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. कुटेनियस नॉक्सियस स्टिमुलेशन, स्किन का अगर पेनफुल स्टिमुलस दें तो ये रिफ्लेक्स मॉडिफाई हो सकती है. एंड जेंड्रेसिक्स प्रोसीजर, जेंड्रेसिक्स प्रोसीजर इज वेरी फनी थिंग. जैसे तुम लोग क्लास में करोगे, यहाँ पे मैंने ये पैर यो रखा, यहाँ पे टेप किया, रिफ्लेक्स आ रहा है. नहीं आता कई बार, आप कुछ भी कर लो या मन में ठान लिया कि रिफ्लेक्स आना ही नहीं देनी है तो नहीं आएगी, आप कितना ही टेप कर लो. बट देयर इज अ प्रोसीजर टू ओवरकम दैट फिनोमिना. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर, ये हम करते हैं रेगुलरली, तो वी आस्क द पर्सन टू पुल द आर्म्स फोर्सफुली अगेंस्ट ईच अदर. तो जब आप टेप करें तब उसे कहें हाथ को खींचिए जोर से, तो सारा एनर्जी यहाँ आ जाएगा, ध्यान बट जाएगा और ये रिफ्लेक्स आराम से बहुत बढ़िया आ जाएगी. तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज द जेंड्रेसिक्स प्रोसीजर. And of course when the stress reflex is executed, then antagonistic muscle must be relaxed simultaneously. तो अगर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्ट्रेच कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, और अगर ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बाइसेप्स को रिलैक्स होना पड़ेगा. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फिनोमेना वी कॉल एज द रेसिप्रोकल इनर्वेशन दैट अकर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड लेवल ओनली. That was the stretch reflex. The second one reflex of the spinal cord is the inverse stretch reflex. As the name suggests, the inverse stretch reflex causes relaxation of the muscle actually. It is responsible for relaxation of the muscle. The stimulus is active contraction of the muscle. Now what happens? मैं एग्जाम्पल दूंगा दूसरे ढंग से, कि नेचुरल तो अलग ढंग से काम करता है.
सपोज आई ट्राई टू लिफ्ट 40 किलोग्राम वेट, मैं वजन उठाने की कोशिश करता हूँ 40 किलोग्राम, जो हो सकता है मैं थोड़ा सा उठा लूं, मगर उससे ज्यादा मैं नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको उठा रहा हूं तो वो वेट मेरे आर्म को नीचे पुल कर रहा है, इसका मतलब ये मसल जो बाइसेप्स है स्ट्रेच हो रही है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। मगर ये स्ट्रेच ऐसा है जो वजन इतना है कि अगर मैंने इसको नहीं छोड़ा तो यहां से टेंडन उखड़ सकता है, that can cause evulsion of the tendon, damage to the muscle can take place. So to prevent that damage, this muscle must relax immediately. तो ये जब हमने फोर्सफुल स्टिमुलेशन स्ट्रेच किया इसको, तो यही मसल बजाय कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्स हो गई। दिस इज द इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ओके, मसल का फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से इनहिबिशन आ रहा है। द डिफरेंस इज दैट इन दिस केस the receptors are located in the tendon of the muscle. Golgi tendon organs are the receptors for inverse stretch reflex. Okay, the fibers carrying the information, sensory fibers, are 1B type of the fibers. 1A was from the muscle spindle, 1B from the Golgi tendon organ. Both are relatively same, fastest conducting fibers. Enters into the spinal cord. Cell body is located in the dorsal root ganglia and relays via an interneuron. An interneuron is interposed and that interneuron is inhibitory in nature. So this becomes a disynaptic reflex. Afferent गया 1B फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड में घुसा और वहां पे इसने एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन से सिनेप्स किया और वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन उसी स्केलेटल मसल के अल्फा मोटर न्यूरॉन पे आ रहा है। So by interposing or introducing one inhibitory neuron in the reflex pathway, the excitatory input has been converted into inhibitory output. So muscle gets inhibited. That is the artificial situation I have seen. But the normal condition, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हम हमेशा वजन उठाते रहते हैं फिर भी ये रिफ्लेक्स होती है, that is because of or is caused by the contraction or tension in the skeletal muscle. मसल में अगर ज्यादा टेंशन डेवलप हो रहा है तो उस मसल के फाइबर को रिलैक्स कर देगी। द पर्पज इज दैट व्हेन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फायर्स इंफॉर्मेशन फॉर द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी, देन सम मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दे आर फायरिंग मोर एक्शन पोटेंशियल, मोर मोटर यूनिट्स आर गेटिंग एक्साइटेड, अदर alpha motor neurons are supplying other muscles, attention is different. So when alpha motor neurons of the spinal cord are activated, then they may not cause smooth contraction of all the motor units. So to smooth out the activity, all motor units must exert similar type of the tension. तो जो मोटर यूनिट ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी उस मोटर यूनिट को इनहिबिट कर दिया जाता है इस फिनोमिना से। सारी मसल रिलैक्स होना जरूरी नहीं है, बट tension created by that motor unit is decreased so that smooth contraction becomes the muscle activity. So that is the inverse stretch reflex. So the stimulus for inverse stretch reflex is the tension in the muscle. Force of contraction कितना है? मसल स्पिंडल का स्टिमुलस है स्ट्रेच ऑफ द मसल, लेंथ कंपैरेटर का काम कर रहा है वो, जबकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन फोर्स डिटेक्टर का काम कर रहा है। फोर्स कितना जनरेट हो रहा है मसल में वो डिटेक्ट होता है। एंड बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन द टेंडन, दे आर इन सीरीज विद द मसल फाइबर। मसल स्पिंडल पैरेलल में सिचुएटेड थे, ये टेंडन में है तो ये सीरीज में आ गए। सो व्हेनेवर द टेंशन इज मोर दे गेट स्टिमुलेटेड एंड कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द सेम मसल फाइबर। Then these are relatively low threshold receptors. Threshold of Golgi tendon organ is relatively less, बहुत कम होता है। जो यहाँ का एग्जाम्पल दिया था वो बहुत टेंशन जनरेट कर रहा था, that is not a normal stimulus. Normal stimulus is the contraction of the skeletal muscle normally taking place. So they are relatively low threshold receptors. Fibers we have seen are 1B type of the fiber, thickly myelinated, response is muscle relaxation, and it is a disynaptic type of the reflex. Function is to regulate the contraction of the skeletal muscle. That is its function. That is the example I have given. This phenomena
क्योंकि अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज ऑटोजेनिक इनिबिशन। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑटोजेनिक इनिबिशन, मतलब इनिबिशन अराइजिंग फ्रॉम द सेम मसल, उसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनिबिशन आ रहा है, इसलिए हम इसको ऑटोजेनिक इनिबिशन भी कहते हैं। नाउ दिस इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स व्हेन हाइपरएक्टिव, जब मसल में हाइपरटोनिया हो जाता है, then it gives a clasp knife type of the reaction. मसल अगर हाइपरटोनिक है तो ये रिफ्लेक्स क्लैस्प नाइफ रिएक्शन देती है। क्लैस्प नाइफ का मतलब समझते हो, मैंने शायद पहले भी दिया हुआ एग्जांपल। क्लैस्प नाइफ रिएक्शन, चाकू अभी भी आते हैं फोल्ड होने वाले, उनको बंद करो तो थोड़ा दबाव लगाना पड़ता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। वो खोलो तो फिर जोर लगाना पड़ता है, फिर अपने आप पूरा खुल जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लैस्प नाइफ रिएक्शन। Such type of the reaction is seen in the skeletal muscles which are hypertonic because of lesions of the upper motor neuron. In those cases, if we try to open the arm, then first large amount of the force is required and then suddenly arms opens up. That is the autogenic inhibition. अपने आप रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि जब हम खोल रहे हैं इसको तो मसल उसको रेजिस्ट कर रही है, बहुत फोर्स जनरेट हो रहा है, डैमेज हो सकता है मसल को, तो मसल गिव्स वे and the relaxation is taking place. So that is the clasp knife reaction, and this clasp knife reaction is due to the stimulation of the Golgi tendon organs by the increased on the skeletal muscle. ये knee jerk reaction जो मैं बता रहा था, so there is an interposition of the inhibitory interneuron. ये डायरेक्ट रिफ्लेक्स आ रही है, ये वाली जो है ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, और यहाँ के जो आ रही है ये वाली, ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। एक इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन काले वाला जो है यहाँ बीच में आ गया है और वो पूरे पाथवे को इनिबिट कर देता है। So these two reflexes or two receptors, muscle spindle and Golgi tendon organ, ultimately what they are doing, they regulate the length of the muscle, they regulate the velocity, they detect the velocity of contraction of the muscle fibers, and they detect the tension or force of contraction of the skeletal muscle fiber. That is the ultimate aim of these two reflexes. Now this stretch reflex, because clinically in the practical class you will also doing this experiment, deep reflexes आप करेंगे, तो जो भी deep reflexes हम करते हैं जिनके मैं नाम बोलने वाला हूँ, बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, सुपिनेटर जर्क, नी जर्क, एंकल जर्क, दी जर्क, जर्क क्यों कहते हैं कि जब हम टेप करते हैं तो जर्की रिएक्शन आता है। दी जर्क्स आर ऑल मैनिफेस्टेशन of the stretch reflex of the spinal cord. So all the deep reflexes which we study clinically are basically we are testing the stretch reflex at various levels of the spinal cord. यहाँ के लिए करेंगे तो सर्वाइकल कॉर्ड को देख रहे हैं, और यहाँ के लिए करेंगे तो लंबर कॉर्ड को देख रहे हैं, बेसिकली फंक्शन। ओके, the third reflex of the spinal cord is the most elaborate reflex, flexor withdrawal reflex. It is a multisynaptic reflex, polysynaptic भी कह सकते हैं, multisynaptic भी कह सकते हैं, and this reflex is of the cutaneous origin. Stretch reflex, inverse stretch reflex, the receptors were located deep into the muscles and the tendons, so they were deep reflexes. Flexor withdrawal reflex, the receptors are located in the skin and subcutaneous tissue, so it is a superficial type of the reflex. Basically it is a superficial, and the stimulus is the pain. Noxious stimulation is required for the flexor withdrawal reflex, and this reflex is prepotent. What is meaning of the prepotent? तेरा मोबाइल यहाँ लिया, तेरा मोबाइल कहाँ है? अरे तेरे से ही बात करो, पहले नंबर बेटा। हाँ, मोबाइल कहाँ, इधर लिया, बोल मैं रहा हूँ, पढ़ मोबाइल से रहा है। मोबाइल कहाँ है? हाँ यहाँ रख दे। हाँ बैठ, आगे बैठ जाओ, और भी
वहां भी बैठ सकता है चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, तेरी मर्जी हो जहां से बैठ। So this reflex, flexor withdrawal reflex is a prepotent reflex. Prepotent का मतलब ये है कि all ongoing activities in the body will stop when this reflex is taking place. इसलिए हम इसको प्रीपोटेंट कहते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज वो सप्रेस कर दी जाती हैं, ये रिफ्लेक्स पहले आती है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। दिस इज ए प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स। दिस फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स, एज आई सेड, स्टिमुलस इज नॉक्सियस स्टिमुलेशन, पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे, एंड द रेस्पॉन्स इज विड्रॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। बट दिस सिंपल विड्रॉल इज नॉट द कंप्लीट एक्सपोजिशन ऑफ द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स। This flexor withdrawal reflex has 4 components. इस रिफ्लेक्स के 4 कंपोनेंट हैं। First we see reflex pathway. The fibers receptors are nociceptors. Okay. Fibers are fast conducting fibers, A delta fibers. Cell body located in the dorsal root ganglia. Central process enters in the spinal cord and gives multiple relays there. It relays around the second order neurons, okay, and then there are collaterals given to the alpha motor neurons of the extensor muscles of the same side. Collaterals crosses to the opposite side, to the flexor muscles of the opposite side, and to the extensor muscles of the opposite side. बात समझे? तो जब ये रिएक्शन आता है फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स, व्हेन इट इज फुल्ली एक्सपोज्ड, जब ये पूरी अपने फुल फॉर्म में अपीयर होती है, तो क्या होता है कि सपोज मैं नंगे पैर चल रहा हूं और पैर में कांटा चुभ गया, आई विल विड्रॉ माई लेग इमीडिएटली लाइक दिस, दिस इज विड्रॉल रिफ्लेक्स सिंपली। बट दिस विड्रॉल is happening because of the two things. One, the flexor muscles are contracting, okay, and when the flexors are contracting, the extensors of the same side must relax, they must relax. तो दो चीजें तो सेम साइड में हो गई, flexor contraction and extensor relaxation. But when I move the leg upward, then there is a tendency to disturb my posture. I can fall on the opposite side. अगर यहां से सपोर्ट नहीं मिला तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा posture डिस्टर्ब हो जाएगा। Okay, so what happens? To support the body, the extensor muscles of the opposite side contract, and there is relaxation of the flexor muscles of the opposite side. So these are the 4 components of the flexor withdrawal reflex: contraction of the flexors of the same side, relaxation of the extensors of the same side, contraction of the extensors of the same opposite side, and relaxation of the flexors of the opposite side. These are the 4 components. Out of these 4 components, the extension of the muscles of the opposite side are actually supporting the body. Okay, so this part is a postural reflex. Now there is a contradiction here. Flexor withdrawal reflex basically is not a postural reflex. ये posture को disturb कर रही है आपके को, postural reflex नहीं है ये, ठीक है। postural reflex कौन सी है? Stress reflex है जो हमने अभी पढ़ी है। So this is disturbing the posture, but one of the components of this reflex, that is extensor, crossed extensor reflex we call it, जो इधर से क्रॉस होकर इधर की बात कर रहे हैं, that crossed extensor reflex is a postural reflex. ये बॉडी को सपोर्ट कर रही है, उसी का कंपोनेंट है, मगर ये अपोजिट साइड में हो रहा है, इसलिए ये बॉडी को सपोर्ट कर रही है। So these are the 4 components of the flexor withdrawal reflex. So these are the properties of the flexor reflex, क्योंकि हम शॉर्ट नोट में पूछते हैं इसको। The flexor withdrawal reflex is of the cutaneous origin, स्किन से आ रही है। Stimulus is noxious stimulation, that is painful stimulus is required for its execution. It is a polysynaptic reflex. It disturbs the posture, of course. It is prepotent. It is prepotent. Supervene करती है, पहले आएगी, बाकी सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। Local sign is there. It is able to confine
टू द एरिया विच इज गेटिंग स्टिमुलेटेड। अब जो मैंने 4 एग्जांपल दिए वो चारों होना जरूरी नहीं है। अगर स्टिमुलस थोड़ा कमजोर है तो सिर्फ थोड़ा सा हल्का ऊपर आके रह जाएगा ही, इधर सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको गिरने की टेंडेंसी नहीं है। सो दिस इज लोकल साइन कहते हैं इसको। एबिलिटी टू कन्फाइन टू द स्टिमुलेटेड पार्ट ओनली, बट इट कैन इरेडिएट हो सकती है डेफिनेटली, और बॉडी पार्ट्स में भी ये स्टिमुलेशन जा सकता है, रेस्पॉन्स आ सकता है। एंड देन दिस शोज द हैबिचुएशन। हैबिचुएशन इज नेवर फाउंड इन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। आप जितनी बार टेप करेंगे उतनी बार रिफ्लेक्स आएगा, दैट हैज टू टेक प्लेस। ओके, ये अकोमोडेट नहीं होती, हैबिचुएट नहीं होती, मगर अगर बार बार आप पिन चुभोते रहेंगे तो वो रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, हैबिचुएशन हो जाता है। ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स में कभी नहीं होता। सो दैट इज सीन इन द फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स। Then, because the response tend to spread to the other spinal cord segments, so we call it the divergence of the input. Input gets diverged to involve multiple body parts for the execution of the reflex. After discharge is also a phenomena. ये भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स में कभी नहीं होती। आफ्टर डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग था तो ये काफी देर तक लेग यहाँ से उठा ही रहेगा। रेस्पॉन्स, स्टिमुलस खत्म हो चुका है बट रेस्पॉन्स इज स्टिल कमिंग, दैट फिनोमिना इज नोन एज आफ्टर डिस्चार्ज। और उसका सबसे बड़ा कारण है रिवर्बरेटिंग सर्किट, जो हम पहले बात कर चुके हैं। सर्किट में घूमता रहता है स्टिमुलस जो है और बार बार रेस्पॉन्स आता है। एंड देन द रिफ्लेक्स टेंड टू गेट फटीग्ड आउट ग्रेजुअली, खत्म होती चली जाती। दीज वर द मेजर रिफ्लेक्सेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा और भी रिफ्लेक्सेज हैं, पॉजिटिव सपोर्टिंग रिएक्शन, नेगेटिव सपोर्टिंग रिएक्शन। ये हम यूजुअली पोस्चर जब पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे इसके बारे में, मगर इतना बता दूं, जैसे हमारे टीचर जो हमें पढ़ाते थे एक रैबिट लाते थे क्लास में, ठीक है, और उसको गर्दन पकड़ के, जैसे जिंदा है रैबिट, ओके, उसको पकड़ा और जो ही आपने उसके पैर टिकाए टेबल के ऊपर, चारों पैर रिजिड पिलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट। एंड दैट कैन हैपन इवन इफ द अपर सेंटर्स आर नॉट देयर। It means spinal cord is executing that particular type of the reflex, and that is known as the positive supporting reaction. And if we remove the animal from the table, then all 4 limbs relaxes immediately. That is negative supporting reaction. So these are the reflexes executed at the spinal cord level. Then there is a cord writing, ये आगे बात करें, cord writing reflex भी हो सकती है। Then stepping, diagonal stepping movements are there, वो भी एनिमल में देख सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से पॉसिबल है। These movements can take place of the single limb, reciprocal stepping of the opposite limbs are there, diagonal movements are there, galloping reflex is there, and scratch reflex. These all reflexes can be executed at the level of the spinal cord without the presence of the either brainstem nuclei or the cerebral cortex. तो ये सारी रिफ्लेक्सेज जो है स्पाइनल कॉर्ड से एग्जीक्यूट हो सकती है। Then there are autonomic reflexes which do not require higher centers at all. They are spinal cord reflexes basically. Maturation reflex पढ़ा दिया होगा किडनी में, डिफिकेशन रिफ्लेक्स डाइजेशन में पढ़ा दिया होगा, ये सब बात जो ये स्पाइनल कॉर्ड की है। Sweating due to local eating, spinal cord is there. पेरिटोनियो इंटरस्टाइनल रिफ्लेक्स, इसके बारे में क्या जानते हो? पेरिटोनियो इंटरस्टाइनल रिफ्लेक्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इनहिबिशन ऑफ इंटरस्टाइनल मूवमेंट ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन। कई बार देखा है हमने सर्जन्स में, सर्जरी डिपार्टमेंट में पेशेंट को ऑपरेट किया, एब्डोमेन खोला था और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ढूंढ रहे हैं, देयर इज अ केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ढूंढना पड़ता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, तो यू हैव टू हैंडल द इंटेस्टाइन, एक को निकाल करके और तलाशना पड़ता है कि ये इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। दैट इज कॉजिंग टू मच ऑफ हैंडलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स, दैट इज कॉजिंग इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम। इसके बाद में हमने मरीज का एब्डोमेन बंद कर दिया और 2 दिन बाद तक पता लगा कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट ही स्टार्ट नहीं हुए, पैरालिटिक इलियस हो गया, इलियम पैरालाइज्ड हो गया एक्सेसिव हैंडलिंग की वजह से। दैट इज द फिनोमेना लाइक दिस।
पेरिटोनियल इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, पेरिटोनियम के इरिटेशन की वजह से देयर इज ए कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द गट मसल्स and there is a complete loss of the intestinal movements are there. That is a very serious condition, of course. And another reflex, mass reflex, which occurs after the spinal cord injury, इसकी हम बाद में बात करेंगे. So this is a simple comparison. Sometimes we ask between the stress reflex और flexor withdrawal reflex में क्या क्या फर्क है. फर्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही चीज है इसके अंदर. Receptor there, afferents are different, response is different, मोनोसिनेप्टिक पॉलीसिनेप्टिक लेटेंसी बहुत शॉर्ट है, इसकी बहुत लॉन्ग है क्योंकि ये पॉलीसिनेप्टिक है तो ज्यादा समय लगता है इसके एग्जीक्यूशन के अंदर. रेस्पॉन्स इसका लीनियर है, मतलब जितना आप दे रहे हैं उतना ही रेस्पॉन्स आ रहा है, जबकि फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स का नॉन लीनियर रेस्पॉन्स आ सकता है. नॉन लीनियर रेस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ, देखा है कभी? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियर रेस्पॉन्स? एनी आइडिया? अरे तुम में से बहुत से हैं जो नॉन लीनियर रेस्पॉन्स देते हैं. कई बार देखा होगा किसी के जरा सी चोट लग जाती है, अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है, हो गया. दैट इज वन टाइप ऑफ रेस्पॉन्स. दूसरा, अरे यार मेरी इतनी लग गई, देखो 2 बूंद खून निकल गया. तीसरा, उसको और भी ज्यादा करता, हाँ यार मेरे कितनी लग गई देखो. दैट इज अ रेस्पॉन्स. स्टिमुलस उतना ही है, डैमेज उतना ही है, मगर अलग अलग आदमी का रेस्पॉन्स अलग अलग आ रहा है. दैट इज ए नॉन लीनियर रेस्पॉन्स. तो ये फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स में होता है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स में कभी नहीं होता. आपने टेप किया तो फ्लेक्शन होगा ही होगा, मसल कांटेक्ट करेगी, लीनियर है. मगर फ्लेक्सर विड्रॉल में नॉन लीनियर रेस्पॉन्स आता है हमेशा. इसमें लेटेंसी कम है, स्टिमुलस लगाया रेस्पॉन्स फौरन आता है क्योंकि एक ही सिनेप्स है. दिस इज मोनोसिनेप्टिक. इसमें ज्यादा टाइम आता है, पॉलीसिनेप्टिक है. डाइवर्जेंस इसमें नहीं होता, जहां आप काम कर रहे हैं वहीं पे रेस्पॉन्स आएगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप रिफ्लेक्स देख रहे हो तो नीचे की भी साथ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता. मगर ये एक्सटेंसिव हो सकती है, अलग और जगह भी. स्टिमुलस पैर में लगाया, रेस्पॉन्स हाथ में भी आ रहा है साथ के साथ. एंड समेशन स्ट्रेस रिफ्लेक्स में बिल्कुल नहीं होता, जबकि फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स में समेशन हो सकता है. मगर एक के साथ दूसरा स्टिमुलस लगाया तो एडअप हो जाएगा, रेस्पॉन्स बढ़ जाएगी आपकी. ओके, ये और इसके फीचर्स है. स्टिमुलस लॉक्ड है, यस. स्टिमुलस जहां अप्लाई किया वहीं पे रेस्पॉन्स आएगा. इसमें रेस्पॉन्स फैल सकता है, ज्यादा दूर पे जा सकता है. लोकल साइन यहाँ नहीं होता, यहाँ मौजूद होता है. आफ्टर डिस्चार्ज इसमें नहीं होता, इसमें होता है. हैबिचुएशन इसमें कभी नहीं होता, इसमें होता है. पॉस्चर ये मेंटेन करती है और ये डिस्टर्ब करती है. फंक्शन है ये पॉस्चरल रिफ्लेक्स और ये प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स है. So these are the comparative differences between the stretch reflex and the flexor withdrawal reflex. That completes the spinal cord as far as the reflexes or reflex functions are concerned. Okay. Then these are the descending motor pathways. क्योंकि आगे की जो हम बात करेंगे वो सारा इन पाथवेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है. So as we already seen, 5 मिनट बात करेंगे इसके बारे में. Motor neurons controlling axial muscles of the body. Now mind it, when we in the CNS discussion we call axial muscles, we are talking muscles of the back of the neck, muscles of the back, soleus and gastrocnemius muscles which are involved in the control of the body posture. जो हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में मदद करती है वो मसल्स postural muscles कहलाती हैं. They are known as axial musculature of the body. While the extremity muscles of the body, these muscles, arms and limbs, and the small muscles of the digits, they are known as axial. They are known as, क्या कहेंगे उनको? Proximal muscles of the body. Proximal है क्या ये? Limb musculature कह सकते हैं इनको, ठीक है? Axial musculature and limb musculature is there. Because two different type of the neurons situated in the spinal cord are serving their function to supply these skeletal muscles of the body. So motor neurons which are innervating the axial musculature, they are lying on the medial side of the spinal cord gray matter. Spinal cord का जो ventral horn है उसका जो medial side है वहां पे जो motor neuron है वो आपके axial और girdle musculature को supply करते हैं. While laterally situated motor neurons are supplying the limb muscles of the body. They are unilateral. लेटरल साइड में है और यूनिलेटरल सप्लाई जा रही होगी.
and alpha and gamma motor neurons which are supplying to a particular muscle, वो एक साथ पास पास होते हैं। ऐसा नहीं कि बाइसेप्स का अल्फा मोटर न्यूरॉन तो यहाँ मौजूद है और उसका गामा मोटर न्यूरॉन वहां दूर है, नहीं, दोनों बिल्कुल पास पास होता है, जिससे एक्टिविटी कोऑर्डिनेट आसानी से हो जाती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये लेटरल डिसेंडिंग पाथवे है and they are ending around the lateral group of the motor neurons, while these are the medial group of medial motor neurons are there। तो यहाँ पे नहीं दिखाया अभी इसने, आगे आएगा, नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। ये लेटरल ग्रुप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है, ये मीडियल ग्रुप है। ये जो है सप्लाई हो रहा है एक्सियल और गर्डियल मस्कुलर पाथवे से, और ये हो रहा है लेटरल पाथवे से। चलिए इसको बाद में देखें।